हेलो नईम, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? नईम, एम आई ऑडिबल? गुड आफ्टरनून गौरव. गुड आफ्टरनून तनिषा. So in 2 minutes we will start. Let others come. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनालिटिक्स आईएएस एकेडमी. स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, दैट इज लेट्स क्रैक आईएएस, एनालिटिक्स आईएएस. सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू पीपल फॉर द कंटिन्यूअस सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम योर साइड in terms of subscription and in terms of your comments, number of queries that you people have been asking. So मैं आपके सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि on Analytics IAS YouTube channel we just started a new series of lectures under a program that is crash course for 50 days targeting UPSC CSC prelims 2020, जिसमें हम आपको एक 50 days के टाइम फ्रेम में we are trying to cover around 500 to 700 important concepts from where UPSC have been asking questions repeatedly. Under this program, every day we are organizing 3 sessions, 11 to 12 geography session, 4 to 5 Indian polity session, and evening or in night hours 9:30 to 10:30 economy session. So through all these sessions you can clear your doubts. So friends, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम इज टू हेल्प यू इन डेवलपिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट all these concepts, all these ideas. You would have gone through these concepts, you would have gone through these ideas through various books, through online classes, through physical coaching classes. but यहाँ पे हमारा जो मेन एम है दैट इज जस्ट टू हेल्प यू कि आप और बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप कर पाएँ, और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ यू शुड गो एंड अपीयर in civil services prelims examination 2020. So in those series of lectures I have already taken 3 lectures on Indian polity. In first class I discussed about historical evolution of Indian constitution. That particular chapter we divided into 2 parts. In first part we discussed all those acts, all those regulations that were pre 1858, and in second part we discussed those regulations, those acts which were post 1858. After that I started with one important idea, one important chapter on Indian polity that was dealing with preamble. So जिन लोगों ने इन classes को miss कर दिया, those who missed these lectures, so I request them that they should go through our YouTube channel and they should go through these concepts. Definitely you will find something extra that right now you are carrying through your previous learning. Definitely you will develop a better understanding about these ideas. And in those series of lectures today friends, I am going to start with one important idea that deals with Indian polity, that is idea of citizenship. And for this particular topic I am explaining you people not from just वन पर्टिकुलर बुक पॉइंट ऑफ व्यू, ना कि केवल एक बुक से मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू वन होलिस्टिक आइडिया अबाउट सिटीजनशिप. Year after year question have been asked from this particular topic of citizenship in Indian polity and constitution section. So एक important area है जहाँ से repeatedly question पूछे गए हैं, particularly from this year's perspective in the wake of Citizenship Amendment Act 2019
and resultant protests and agitations that were going on, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस साल ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है. हालांकि मैं यहाँ पे यूपीएससी को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट यस, दिस इज वन आइडिया दैट यू शुड फोकस in terms of your understanding if you are going through polity section of general studies paper. So this is one important aspect. For explaining you this particular idea in within 1 hour, I have divided my entire lecture into 3 parts. In first part, I will try to give you people some general understanding about this idea of citizenship. In second part, I will try to discuss those articles in your constitution that are dealing with citizenship, and in third part I will try to explain most important aspect that deals with citizenship, that is Indian Citizenship Act 1955 and relevant amendment that have taken place in last 70 years in Indian Citizenship Act. But friends, before entering into this particular chapter, before entering into this particular topic, as I said earlier, first I will try to give you people some general idea about citizenship, some general understanding about citizenship, and that general idea, that general understanding, I will say specifically as essential prerequisite. ये वो नेसेसिटी प्री रिक्विजिट है जो आपको पता होनी चाहिए जब आप इस चैप्टर में एंट्री कर रहे हैं, जब इसकी बारीकियों को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग प्रोविजंस को जानने की कोशिश कर रहे हैं. तो उससे पहले एक जनरल आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ. कुछ जनरल टर्म्स जो कि हम कॉमन इंटरेक्शन में यूज़ करते रहे हैं, बट कई बार हम इन टर्म्स को लेके क्लियर नहीं होते. सिनोनिमसली वी हैव बीन यूजिंग दीज टर्म्स इन आवर जनरल इंटरेक्शन. So first important general idea or general difference I want to explain with you people, that is a difference between nationality and citizenship. So friends, nationality is a term that is generally used in context of international law, while citizenship is a kind of romance between an individual and state. तो nationality का जो idea है जनरली हम उसे इंटरनेशनल लॉ में यूज करते हैं टू assert, to verify a person who is holding passport of one country just to determine his nationality, while this idea of citizenship generally we use in context of political terminology while explaining relationship between individual on one side and state on other side. So that is one general difference between nationality and citizenship. Nationality जो हम इंटरनेशनल लॉज में यूज करते हैं, while citizenship that we use it with reference to our constitution to explain, to establish legal relationship of an individual with respect to that particular state. Second important difference that I want to make with you people, that is a difference between a citizen and resident. So many of you already might be knowing about this particular difference. उसके बाद भी since मैं इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेजिडेंट इज अ टर्म जनरली वी यूज इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी just to establish a taxation pattern of a particular individual, that whether that particular individual is paying taxes in this country or some other country. So residency or resident is generally used in economic terminology, while citizenship, as I discuss with you people just now, it is a political term. So in political domain, political terminology, we use the idea of citizenship. In economic domain, in economic terminology, we use the idea of residency or resident. Another important difference that I want to make with you people, that is people living in any political community, people living in any country can be broadly divided into two categories. One category is of citizen and another category is of alien. So citizens of foreign countries, countries outside your state, they will be referred as aliens for our polity purpose, legal purpose. So those who are not citizen of this country, they will be classified as what? Aliens. And these aliens can be friendly alien as well as enemy alien. Friendly alien से मेरा मतलब ये है कि you are citizen of any foreign nation and right now you are living in India, you will be referred as
alien or friendly Indian. But if you are citizen of a particular country with which your own country is at war, then you will be declared as an enemy alien. So mind it friend, here I just want to make a clarification. So many times we have a kind of misconception कि citizens of Pakistan they are enemy alien. This is not the case. We are not at war with Pakistan. So अगर पाकिस्तान का भी कोई citizen इंडिया में रह रहा है तो he is also our friendly alien, except during those occasion, except during that time period when our state has already declared a war with that particular country. During that time period, if you are found on the soil of India, then probably you will be referred as an enemy alien. So that is one distinction between friendly alien and enemy alien. So first distinction I tried to make between nationality and citizenship. Second distinction I tried to make between residency and citizenship. Third distinction I made, that is citizens and aliens. Aliens मैंने आपके साथ डिस्कस किया, they can be of two category, friendly alien and enemy alien. Enemy alien I am saying it is not a permanent term. Only when your country is at war with that particular country, and during that war, if citizen of that country is found on your soil, you may refer him as an enemy alien. So I hope कि ये डिस्टिंक्शन जो कि एक जनरल डिस्टिंक्शन है आपको क्लियर हो रहा होगा. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, दैट इज पर्सन ऑफ व्हाट, इंडियन ओरिजिन. और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि फॉरेन नेशनल्स बिलोंगिंग टू 8 नेशनैलिटीज. सो फॉरेन नेशनल्स नॉट बिलोंगिंग टू 8 नेशनैलिटीज. ये 8 नेशनैलिटीज कौन है? आपके अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान ऑन वन साइड, China, Nepal, Bhutan on other side, Bangladesh and Sri Lanka on the other side. So if you are not belonging to these 8 nationalities, and if your parents, grandparents and great grandparents, they have been born in India, then you will be regarded as what? A person of Indian origin. So this thing you have to keep in your mind, that why I gave exemption to these 8 nationalities on your western part, on our eastern part, then Sri Lanka and Bangladesh. So foreign nationals not belonging to these 8 nationalities whose parents, grandparents and great grandparents have been born in India, they will be referred as what? Person of Indian origin. So again I am saying nationality and citizenship, resident and citizenship, citizen and alien, friendly alien and enemy alien, and then the idea of PIO. I hope you people have got some general idea about these concepts. Now friends, I will come on our main topic, that is Indian citizenship. So जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि citizenship एक तरह का रोमांस, एक तरह का रिलेशनशिप है between individuals and his state. So we borrowed idea of single citizenship from England. So unlike US where there is idea of dual citizenship, in context of India, we borrowed the idea of single citizenship from England. So many of you will ask, sir, why not we have borrowed the idea of dual citizenship in the pattern of US? So can anyone among you answer that why we have not borrowed the idea of dual citizenship? कमेंट बॉक्स में अगर आप इसे लिखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मेनी ऑफ यू हैव बीन ऑलरेडी प्रिपेयरिंग यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. सो फ्रेंड्स, हमने डुअल सिटीजनशिप यूएस के पैटर्न पे क्यों अडॉप्ट नहीं किया? इसलिए अडॉप्ट नहीं किया फ्रेंड्स बिकॉज द पॉलिटिकल सिचुएशंस एट दैट टाइम प्रोबेबली दे वर नॉट कंड्यूसिव फॉर दैट. सो उस समय की अगर पॉलिटिकल सिचुएशंस को आप याद करें तो आप पाएंगे कि ये वो टाइम था जब इंडिया वॉज जस्ट एन इन्फेंट इंडिपेंडेंट स्टेट. कंडीशंस वर वेरी फ्रजाइल. वी वर ट्राइंग टू इंक्लूड प्रिंसली स्टेट्स विद इन इंडियन यूनियन. सो इफर्ट्स लिए जा रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन का पार्ट बनाने के लिए. स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही थी. लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया पे कई जगह पे ऐसी भी बात थी कि रिलीजियस क्राइटेरिया पे कुछ डिमांड्स चल रही थी. वी स्टार्टेड आवर जर्नी विद पार्टीशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट the idea of dual citizenship on the pattern of US or American pattern we did not borrow, considering कि it may give rise to sub-nationalism
we would have parted away if we would have gone for such kind of dual citizenship. And because of that, in order to strengthen our national feelings, our constitution makers at that time decided that we will follow the idea of single citizenship and not the idea of dual citizenship that is prevailing in context of US, even though we borrowed certain federal features. But this feature we did not borrow from US. We took idea of single citizenship from England. So perhaps ये आइडिया आपके माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि क्यों हमने ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं ली, कंसिडरिंग पॉलिटिकल सिचुएशन एट दैट टाइम. नाउ वन थिंग विल कम इन योर माइंड कि व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग सो मच ऑन सिटीजनशिप. सिटीजनशिप में ऐसा स्पेशल है क्या? क्या एक्स्ट्रा मिल जाता है जस्ट बिकॉज हम सिटीजन होते हैं, और क्या हमें नहीं मिलता अगर हम सिटीजन नहीं होते? सो फ्रेंड्स, सिटीजन इज समवन हु एंजॉयज full membership of what? That political community. And here by full membership what I mean that you will get all social, political and economic rights by virtue of being what? Citizen. Some of these rights may be extended to aliens but not all rights. So ये जो differentiation है कि कुछ rights आप citizen को extra दे रहे हैं या कुछ rights आप aliens को नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? देयर शुड बी सम रीजनिंग, देयर शुड बी सम लॉजिक व्हेन वी आर एक्सटेंडिंग नंबर ऑफ राइट्स टू सिटीजन, बट सम ऑफ दीज राइट्स वी आर नॉट गिविंग टू whom? Aliens or non-citizens. So reason is, friend, any state or any government may have limited economic resources. So आपके पास limited economic resources हो सकते हैं जिनसे आप justice या equality लोगों को देना चाह रहे हैं. So many times governments they make such rules that certain privileges, like in terms of employment, in terms of rights, that will be available only to their own people who are classified as citizen, may not be available to those people who are not classified as citizen. So that is one reason, that is considering you have limited resources, considering people have unlimited desires. So with those limited resources you want to satisfy your own people, and because of that certain special rights you are extending to citizens that may not be available to whom? Aliens. So some basic rights will be available to all individuals, whether they are citizen, whether they are alien, but some rights which you may say special rights, like in terms of fundamental right, article 15, that is right against discrimination, जो आगे आके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. आर्टिकल 16 that deals with equality of opportunity, article 19 that deals with freedom or democratic freedom, then article 29 and 30 that deals with cultural and educational rights of what? Minorities. ये कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, ये कुछ स्पेशल राइट्स हैं दैट आर एक्सक्लूसिवली अवेलेबल टू सिटीजन्स, नॉट अवेलेबल टू होम? एलियंस. दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि स्टेट में नॉट एक्सपेक्ट सेम लेवल ऑफ लॉयल्टी, सेम लेवल ऑफ अफेक्शन from those who are not citizen of that particular political community, and because of that also a state may restrict enjoyment of certain rights in case of aliens, while those rights, those privileges may be extended to whom? Citizens. So these are the two reasons through which I try to explain you why some special privileges are available to citizens that may not be available to aliens. Then under article 22 that आगे जाके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि there are certain protections with regard to arrest and detention that may not be available to enemy alien. So जब हम आपके साथ ये protections डिस्कस करेंगे in chapters of fundamental right, I will discuss these protections in detail, but these protections may not be available to those who are being classified as enemy alien. So कुछ rights available नहीं है नॉन सिटीजन्स को, वो कुछ स्पेशल राइट्स हैं जो केवल अवेलेबल हैं सिटीजन्स को. देन फर्दर आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि अंडर आर्टिकल 22 देयर आर सर्टेन प्रोटेक्शंस दैट मे नॉट बी अवेलेबल टू एनिमी एलियन. देन देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, देयर आर सर्टेन सेंसिटिव ऑफिसेस वेयर ओनली सिटीजन्स कैन बी अपॉइंटेड, एलियंस कैन नॉट बी अपॉइंटेड. परहैप्स जो मैंने आपको रीज़न दिया कि उस तरह की लॉयल्टी, उस तरह का अफेक्शन
उस तरह की रेस्पेक्ट टुवर्ड्स योर कॉन्स्टिट्यूशन you may not expect from those who are not citizen of this country, and because of that their appointment to these public offices, their appointment to these constitutional offices, their appointment to these sensitive offices can be restricted under Indian constitution. Now question is that can a naturalized citizen hold such offices or not? So in case of Indian constitution allows even a naturalized citizen to hold such constitutional offices, unlike US where a naturalized citizen cannot hold such constitutional offices. Only citizen by birth can hold such constitutional offices. So for example, for your easy understanding, if someone became citizen through process of registration, so Indian constitution is not prohibiting people from holding such constitutional offices. Representation of People Act only says that you should be citizen of India. So friend, this thing you have to keep in your mind, that in case of US, a naturalized citizen cannot hold such sensitive constitutional posts, but in case of India, there is no such disability associated with any naturalized citizen that they cannot hold such kind of constitutional post. Further, in context of Indian constitution empowers Indian Parliament to frame and regulate citizenship. So you will find limited provisions in Indian constitution dealing with citizenship in detail. Indian constitution has empowered Indian Parliament to regulate and frame provisions related to citizenship. So constitution authorize कर रहा है Indian Parliament को कि आप citizenship से related detailed rules and regulation frame कर सकते हैं. And now here friends, for your understanding, I have divided these articles dealing with citizenship into two categories. First category is Article 5 to 8 and second category is mentioned as Article 18. There are two other articles, Article 9 and Article 10 also, that you will find missing here. So उन दो आर्टिकल्स को मैं किसी कैटेगरी में नहीं रख पा रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने दो कैटेगरीज आपको बताई फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आगे जाके मैं 9 और 10 को भी एक्सप्लेन करूंगा, बट अगर इनको किसी ब्रॉड कैटेगरी में आप कैटेगराइज करना चाहें तो फर्स्ट कैटेगरी विल बी ऑफ आर्टिकल 5 to 8 एंड सेकेंड कैटेगरी विल बी ऑफ आर्टिकल 11. सो फ्रेंड्स, सो आर्टिकल 5 to 8 यहाँ पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. दे आर डीलिंग विद दोज कैटेगरी ऑफ पीपल who became citizen of India or who are eligible to become citizen of India at the time of what? Commencement of Indian Constitution. So आर्टिकल 5 से 8 डील कर रहा है उन लोगों के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन के आते समय 1950 में दे आर बिकमिंग इंडियन सिटीजन या वो इंडियन सिटीजन बनने के लिए एलिजिबल हैं. वाइल आर्टिकल 11 ये लार्जली डील कर रहा है सिटीजनशिप इन पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ईयर्स. सो ये बोल रहा है इंडियन पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट हैज पावर टू रेगुलेट एंड इनैक्ट लॉज फॉर एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप post 1950. So 5 to 8 is largely dealing with idea of citizenship for those people who are becoming citizen or eligible to become citizen in 1950 at the time of what? Commencement of Indian Constitution. But आगे आने वाले सालों में, आगे आने वाले years में, in future years, we are empowering Indian Parliament that Parliament can regulate and enact laws related to citizenship post 1950. So ये दो broad categories हैं, 5 to 8 dealing with at the time of commencement of constitution. Article 11 is more relevant for those who wants to acquire citizenship after 1950 आगे आने वाले सालों में. So ये दो broad categories हैं. Now we will try to discuss these two categories in detail कि आर्टिकल 5 किससे डील कर रहा है, आर्टिकल 6 किससे डील कर रहा है, आर्टिकल 7 किससे डील कर रहा है और आर्टिकल 8 किससे डील कर रहा है. सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 5 इज टॉकिंग अबाउट दोज पीपल हु आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया प्लस दे आर फुलफिलिंग वन कंडीशन अमंग 3 कंडीशंस दैट आई विल डिस्कस विथ यू पीपल. सो डोमिसाइल से मतलब मेरा ये है
कि आप या तो इंडिया में रह रहे हैं या यू आर इंटेंडेड टू लिव इन इंडिया एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, then you will be regarded as domiciled in India. Along with domicile in India, there are three conditions, and these three conditions are that you have been born in India. Second condition is either of your parents were born in India, and third condition is that you have been living in India for last 5 years. इन तीन conditions में से अगर आप एक भी condition को fulfill करते हैं and you are domiciled in India, then you are eligible for citizenship at the time of commencement of Indian Constitution. इसी के साथ साथ बहुत सारी डेट्स भी यहाँ पे मेंशन है. उन डेट्स को मैंने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज फ्रॉम माई परसेप्शन, फ्रॉम माई आइडिया, आई पर्सनली थिंक दैट यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क अबाउट दीज डेट्स. Otherwise, if you want to remember these dates, you may remember from the perspective of state PSC examination. But as far as UPSC is concerned, you may exclude these dates. Otherwise, it will make difficult for you to understand this chapter of what? Citizenship. So, Article 5 में domiciled in India plus any one condition out of three conditions that I discussed with you people. If you are fulfilling, then you are eligible to become citizen of India at the time of what? Commencement of Indian Constitution. आर्टिकल 6 और 7 में एक कॉमन थीम आप पाएंगे कि आर्टिकल 6 और 7 उन्हें कवर कर रहा है दोज हु गॉट अफेक्टेड थ्रू पार्टीशन और माइग्रेशन. वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पार्टीशन और माइग्रेशन. आर्टिकल 6 इज कवरिंग दोज पीपल हु केम फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, who wants to become citizen of India, and it is giving citizenship to them depending upon certain dates. कि इस डेट तक अगर आप इंडिया में आ गए then you will be eligible to become citizen of India. आर्टिकल 7 में भी यही थीम है, बट आर्टिकल 7 is covering those people जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए at the time of independence, at the time of partition, बट जब उन्हें conducive environment नहीं मिला पाकिस्तान में, again they came back to India. So such persons are covered under Article 7 for the purpose of becoming citizen of India at the time of commencement of Indian Constitution. And friends, Article 8 is dealing those people who at that time living outside India, but any of their parents or grandparents, they have been born in India, so they are eligible to become citizen of India at the time of what? Commencement of Indian Constitution. That is the general idea about 5 to 8. So these things you have to keep in your mind कि आर्टिकल 5 डील कर रहा है उनके बारे में जो डोमिसाइल्ड इन इंडिया है, और जो तीन कंडीशंस मैंने आपके साथ डिस्कस की उनमें से किसी एक को फुलफिल करते हैं. आर्टिकल 6 और 7 में एक कॉमन थीम आपको याद रखनी है कि दैट इज कवरिंग दोज हु आर विक्टिम ऑफ पार्टीशन और माइग्रेशन. And Article 8 is dealing with those who at that time in 50s living outside India, but their parents or grandparents, they were born in India. So ये broad categorization you have to keep in your mind. Don't go behind these dates. If you are trying to remember these dates, it will appear very difficult for you to master this chapter of citizenship. And because of that, since it is a crash course, I removed these dates from these slides and just try to give you one idea. With that you can approach in examination. So that was Article 5 to 8, and now Article 11 that deals with Citizenship Act. So since हमने आपके साथ डिस्कस किया कि Article 11 empowers Parliament to enact and regulate laws related to citizenship. Accordingly, Parliament enacted Citizenship Act 1955 that regulates these aspects of acquisition and citizenship in detail. So since Constitution empower करता है Parliament को कि आप लॉ बना सकते हैं, इनैक्ट कर सकते हैं और रेगुलेट कर सकते हैं सिटीजनशिप इन पोस्ट 1950 ईयर्स, उसी के अकॉर्डिंग इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया नोन एज सिटीजनशिप एक्ट 1955. और ये सिटीजनशिप एक्ट फ्रेंड्स एक बार नहीं कई बार अमेंड हुआ है. So it got amended in 1957, it got amended in 1985, in 86, in 92, 2003, 2005, 2015 and 2019
it got amended. So these are the amendment in Indian Citizenship Act 1955. So आप इंडिया के सिटीजन बन सकते हैं और कैसे आप इंडिया के सिटीजनशिप को लूज कर सकते हैं. So it talks about 5 ways through which you can become citizen of India and 3 ways through which you may lose citizenship of India. So ये 5 तरीके हैं citizenship by birth, citizenship by descent, citizenship by registration, citizenship through naturalization and citizenship through acquisition of territory. So इन 5 तरीकों से suppose they came to travel India for tourism purposes, या सपोज वो ताजमहल घूमने आए और यहाँ पे इंडिया में टूरिस्ट वीज़ा पे आए और किसी बच्चे की यहाँ पे बर्थ होती है. सो वेदर दैट चाइल्ड विल बी इंडियन सिटीजन और नॉट, इट विल क्रिएट सम लीगल कॉम्प्लिकेशन. एंड बिकॉज ऑफ दैट इन 1987 वन अमेंडमेंट वॉज इंट्रोड्यूस इन इट दैट अ पर्सन इज बॉर्न इन इंडिया एंड वन ऑफ हिज पेरेंट इज एन इंडियन सिटीजन, then that person will acquire Indian citizenship by birth. But later on in 2004 another amendment was introduced that a person is born in India, one of his parent is an Indian citizen and second parent should not be an illegal immigrant, then such person will be acquire Indian citizenship by birth. So please mind it friends, through these 3 columns, through these 3 boxes, I am trying to make it very clear कि what all changes have been introduced in this particular aspect, that is how to acquire Indian citizenship by birth. 1950 में बहुत ही सिंपल था कि any person who have been born on soil of India, he will be regarded as what? Indian citizen. बाद में आपने उसमें एक amendment introduce किया कि one of his parents should be an Indian citizen, and 2004 onwards you are following another criteria that second parent should not be an illegal migrant. So that is Indian citizenship by birth, where you are sharing soil of India, you are sharing blood of India. So just solely and just sanguine both is getting applied in this case, and you are becoming citizen of India by birth. Next is citizenship by descent. So try to अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि वंश से आप कैसे इंडिया के सिटीजन बन रहे हैं. 1950 में बहुत ही सिंपल था, जिसमें आप बोल रहे थे कि हो सकता है कि आप के पेरेंट्स किसी एजुकेशनल पर्पस की वजह से, एम्प्लॉयमेंट पर्पस की वजह से इंडिया से बाहर गए हों, और बाहर रहते हुए अगर किसी चाइल्ड का बर्थ हुआ है, तो इफ़ फादर ऑफ दैट चाइल्ड इज़ एन इंडियन सिटीजन, देन दैट चाइल्ड विल गेट इंडियन सिटीजनशिप बाय व्हाट? डिसेंट. आपको डिसेंट के थ्रू इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी अगर आपके फादर इंडियन सिटीजन रहे हैं और आपका बर्थ इंडिया की सॉइल से बाहर हुआ है. सो यहाँ पर यू आर शेयरिंग ब्लड विच इज़ इंडियन, बट यू आर नॉट शेयरिंग सॉइल ऑफ इंडिया. सो जस्ट सैंग्विन अप्लाई हो रहा है, ब्लड रिलेशनशिप अप्लाई हो रहा है, बट सॉइल का रिलेशनशिप अप्लाई नहीं हुआ है. बट लेटर ऑन आगे जाके ऐसा देखा गया कि विमेन भी इंडिया से बाहर जा रही हैं. इंडियन विमेन आर गोइंग अब्रॉड फॉर एजुकेशनल पर्पजेज, एम्प्लॉयमेंट पर्पजेज. और वो जो क्लॉज था जिसमें आप ऐसा बोल रहे थे कि फादर शुड बी एन इंडियन, वो जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट देखा गया. And in order to bring it at par with the idea of gender equality, it got amended, and now we are saying in 1992 that a person's either of parent should be an Indian citizen. So father or mother, anyone can be an Indian parent. So यहाँ पे हमने कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की है. 1950 में हम बोल रहे थे कि father should be Indian. Here we are saying any of the parents should be an Indian citizen. Any or both of parent can be Indian citizen, then person will acquire Indian citizenship by descent. 2004 onwards एक important amendment इसमें introduce किया गया है, जिसमें आप बोल रहे हैं कि child or person who is born of any Indian parent, plus you have to submit an undertaking, you have to submit an application in Indian Consulate General that this particular child is not holding any foreign passport. That is another clause later on amended in 2004, later on added in 2004. So that is how acquisition of citizenship or idea of acquisition of citizenship by descent got evolved from 1950 till 2004. शुरू में बस आप इंडियन फादर की बात कर रहे थे,
उसे करेक्ट करके आपने 1992 में इंडियन पेरेंट को बात की, और उसके बाद 2004 में आप बोल रहे हैं कि एक अंडरटेकिंग भी सबमिट करनी पड़ेगी कि ये चाइल्ड, ये बच्चा कोई फॉरेन पासपोर्ट कैरी नहीं कर रहा है. सो दैट इज सिटीजनशिप बाय डिसेंट. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू सम इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजिंग एरियाज जहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है. दैट इज सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन. सो फ्रेंड, in citizenship of registration there are certain categories of people who are eligible to apply for Indian citizenship. Citizenship by birth और citizenship by descent के केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आपको citizenship as a natural right मिल जा रही थी. As a natural right का मतलब ये है कि state was just recognizing कि yes you are an Indian citizen if you have been born in India, that is citizenship by birth, or if you are sharing blood of any Indian, that is one or both of your parents are what, an Indian citizen. So citizenship by birth और citizenship by descent में largely हमने ये समझा कि राज्य या स्टेट आपको सिटीजनशिप दे नहीं रहा है, वो बस रिकॉग्नाइज कर रहा है कि यस यू आर एन इंडियन सिटीजन. बट सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन और सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन ये डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिशन है स्टेट के पास टू गिव यू और नॉट टू गिव यू सिटीजनशिप. तो अगर किसी पर्सन को सिटीजनशिप बाय बर्थ दी जा रही है, वहाँ पे स्टेट आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है कि हाँ आप हमारे सिटीजन हैं. बट यहाँ पर स्टेट सिटीजनशिप दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता. इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि वाई सिटीजनशिप बाय बर्थ एंड सिटीजनशिप बाय डिसेंट इट डिफरेंट फ्रॉम सिटीजनशिप बाय registration and naturalization. So here friends, 6 columns, 6 boxes are there. In first box it has been mentioned that person of Indian origin except citizen of Pakistan and Bangladesh plus 7 years of stay in India just before making application, that is date of application. इसे correct कर लीजिएगा आप लोग. यहाँ पे DCA लिखा है, that is DOA, that is date of application. सो अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है. पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन है मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है. प्लस 7 years ऑफ स्टे इन इंडिया बिफोर डेट ऑफ एप्लीकेशन, दैट इज फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकंड क्राइटेरिया इज कि आप कोई फॉरेनर हैं बट मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन. सो आप में से कोई भी बाहर जाता है पढ़ने के लिए या जॉब के लिए और वहाँ पे किसी जर्मन से या फ्रेंच से या अमेरिकन से भी हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए और वो पर्सन इंडिया में आते हैं and by ordinarily living in India for 7 years, she or he intends to show that wants to live in India, so they may apply for what? Citizenship by registration. Then minor children of Indian parents, then person of Indian origin residing in any country outside undivided India. Outside undivided India का मतलब ये है कि इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात हो रही है. तो आप इनके अलावा किसी कंट्री में रह रहे हैं, देन यू मे अप्लाई फॉर व्हाट? इंडियन सिटीजनशिप. देन ओसीआई कार्ड होल्डर. ओसीआई कौन है आगे जाके मैं आपके साथ डिस्कस. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर 5 साल इंडिया में रह के दे मे अप्लाई फॉर व्हाट? इंडियन सिटीजनशिप थ्रू सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन. देन लास्ट इज पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी जिसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन हैं, he or she may also apply for what? Indian citizenship. But friends, here one thing you have to keep in your mind कि ये जो 5 साल 7 साल की रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन है ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है. दैट इज नॉट सफिशिएंट क्वालिफिकेशन. ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है. जस्ट केवल इंडिया में रहने से आपको सिटीजनशिप नहीं मिल जा रही है. अलग अलग क्राइटेरियाज यहाँ पे यूज किए जा रहे हैं. पहले बॉक्स में PIO मेंशन है, दूसरे में योर मैरिज टू एन इंडियन इज मेंशन है, तीसरे में यू आर ए माइनर चाइल्ड ऑफ इंडियन पेरेंट, देन यू आर OCI कार्ड होल्डर. सो दीज आर सम एक्स्ट्रा क्राइटेरियाज, एक्स्ट्रा क्रेडेंशियल दैट यू आर यूजिंग while seeking Indian citizenship, that is citizenship by registration. Now friends, I will discuss with you people this most important or very confusing thing of citizenship by naturalization, जहाँ पे बार बार बच्चों को confusion होता है. कई बार वो यहाँ पे अपनी क्लैरिटी को डेवलप नहीं कर पाते. यहाँ पे कुछ प्री कंडीशंस हैं. देर आर सर्टेन कंडीशंस दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर ए फॉरेनर एंड यू वांट टू बिकम एन इंडियन सिटीजन थ्रू प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन,
First condition is that you are not a citizen of a country where Indian citizens are not allowed to take citizenship. अगर आप सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन बनना चाहते हैं तो ये पहली कंडीशन है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी. उसी कंट्री के सिटीजनशिप को नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप दी जाएगी जिस कंट्री में इंडियंस को सिटीजन बनना अलाउड है. अगर कोई ऐसी कंट्री है दैट इज नॉट अलाउइंग इंडियंस टू बिकम सिटीजन, you are not eligible for citizenship by naturalization. First thing. Second thing, after becoming citizen you will have to renounce your previous citizenship. आपको अपनी पुरानी citizenship छोड़नी पड़ेगी after acquiring what? Citizenship. Third, I am saying you have to submit an undertaking that after receipt of citizenship ordinarily you will be living in India. Fourth is that you should acquire familiarity with one of the language mentioned in 8th schedule. और एक्सट्रीम राइट के जो दो बॉक्स हैं उन्हें मैं कॉम्बिनेशन में पढ़ने की कोशिश करूंगा. यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे दो चीज़ें मेंशन है. पहली चीज़ ये है कि लास्ट 14 ईयर में क्यूमुलेटिवली ऑर्डिनरली आप 12 साल इंडिया में रहे हैं. सो आउट ऑफ लास्ट 14 ईयर, लाइक सपोज यू आर ट्राइंग टू अप्लाई इंडियन सिटीजनशिप इन जुलाई 2020. सो जुलाई 2020 से पीछे की तरफ जब आप जाएंगे पिछले 14 ईयर्स में, आउट ऑफ दूस 14 ईयर्स 12 ईयर्स यू हैव बीन लिविंग इन इंडिया क्यूमुलेटिवली ऑर्डिनरली, एंड आउट ऑफ दिस 12 ईयर्स लास्ट 12 मंथ आप लगातार इंडिया में रहे हुए हैं. तो 11 ईयर ऑर्डिनरली प्लस 1 ईयर कंटिन्यूसली, इन टोटलिटी 12 ईयर्स. आउट ऑफ लास्ट 14 ईयर if you have been living in India, then you are eligible to apply for Indian citizenship by naturalization. Since यहाँ पे आप लोग को confusion हो रहा होगा इस कैलकुलेशन को लेके, फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन. पहला तो ये उन कंट्रीज के लिए सिटीजन्स के लिए जहाँ पर इंडियन सिटीजन्स आर नॉट डिनाइड सिटीजनशिप. यू हैव टू मेक ए डिक्लेरेशन that you will renounce your previous citizenship. You are declaring that your intention is to live in India after acquiring such citizenship, and you are well aware with any of Indian language mentioned in 8th schedule. उसके बाद रेजिडेंशियल क्वालिफिकेशन वाली बात आ रही है जहाँ पे कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं. मैं आपसे बोल रहा हूँ कि पिछले 14 सालों में क्यूमुलेटिवली कॉम्बिनेशन में 12 साल आप इंडिया में रहे हैं. इन 12 सालों में 11 साल डिसकॉन्टिन्यूटी के साथ भी हो सकता है. आप रहे, आप बाहर गए, आप रहे, इन कॉम्बिनेशन 11 ईयर, एंड 12 मंथ कंटिन्यूसली बिफोर मेकिंग योर एप्लीकेशन. सो इस सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लास्ट 12 मंथ में ऑर्डिनरली आप कंटिन्यूएशन में इंडिया में रहे हुए हैं. देन यू मे अप्लाई फॉर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन. बट माइंड इट फ्रेंड, इलीगल इमिग्रेंट्स जो इलीगली इंडिया में आए हुए हैं, they are not eligible to apply for citizenship through either by registration or by naturalization. So जो illegally आए हैं इंडिया में उनके लिए रजिस्ट्रेशन और उनके लिए नेचुरलाइजेशन वाला क्लॉज अप्लाई नहीं होता है. ये बात आपको याद रखना पड़ेगा. एंड इफ सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स, इफ इंडिया वांट्स, देन इंडिया में वेव ऑफ all these preconditions in case of naturalized citizen. If you are an exceptional talent, if you have contributed humanity through your exceptional talent in art, science, literature, word peace, or in such relevant areas, then you are an asset for us. आपका स्वागत है. स्टेट या गवर्नमेंट आपके लिए सारी प्री कंडीशंस को वेव ऑफ कर सकती है, प्रोवाइडेड आप एक एक्सेप्शनल टैलेंट है और उस टैलेंट को आपने स्टैब्लिश किया है, प्रूव किया है लास्ट 10-15 ईयर में. सो ये कंडीशंस यहाँ पे वेव ऑफ की जा सकती हैं. देन द लास्ट मीन्स थ्रू विच यू कैन बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया, दैट इज थ्रू एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी. It says that whenever a new territory is acquired, then central government may by law specify category of people who will become Indian citizen. Some may be exempted, but it will specify category of people who are going to become citizen of India. यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा,
जिसको बस मैंने पौंडीचेरी करके मेंशन किया है कि आज भी पुडुचेरी में, अर्लियर इट वाज नोन एज पौंडीचेरी, आज भी वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं दोज स्टिल एंजॉइंग सोशल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट। जब भी फ्रांस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, बैलेट बॉक्स दे आर केप्ट इन पौंडीचेरी, they exercise their voting right. So that is one exemption, that as certain categories of people they may be exempted and certain categories of people they may be declared as what Indian citizen by acquisition of what territory. ऐसी territories हमने acquire की हैं post independence India में। प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो एग्जाम्पल ऑफ गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, these examples we have discussed where citizenship can be acquired through acquisition of territory also. So friends, citizenship by birth, citizenship by descent, citizenship by registration, citizenship by naturalization and citizenship by acquisition of territory. लास्ट के जो 3 मीन्स हमने डिस्कस किए, यहाँ पे स्टेट आपको सिटीजनशिप दे रहा है। फर्स्ट जो 2 वेज मैंने आपके साथ डिस्कस किए, बाय बर्थ एंड बाय डिसेंट, their state is recognizing you as citizen of India. They have no choice, not much choice, not to give you citizen if you are sharing soil of India, if you are sharing blood of India. So first 2 ways, how they are different from last 3 ways, that idea might be clear in your mind. Now we will discuss loss of Indian citizenship as per Citizenship Act 1955. So friends, there are 3 ways through which any Indian citizen he may lose his Indian citizenship, that is renunciation, termination and deprivation. One by one I will try to explain you that what I mean by renunciation, termination and deprivation. Renunciation एक voluntary act है, act of grace है। Any Indian citizen after acquiring citizenship of some other country by informing Indian official may surrender his Indian citizenship. Mind it here that once you are surrendering your citizenship through renunciation, your minor children, they will also lose their Indian citizenship. Later on they may apply for Indian citizenship, that is different thing. But if you are surrendering your Indian citizenship by renunciation, your minor children will also lose their citizenship, but you are not allowed to renounce your citizenship during period of war. That is one exception here. Citizenship by termination means if you acquired citizenship of any foreign country, your Indian citizenship got terminated from the day you acquired citizenship of what? Some other country. That is citizenship by termination. And citizenship of deprivation, it covers those instances where a person acquired citizenship of India by fraud or by misrepresentation of fact. When facts will be disclosed, then you may lose your citizenship. So one person has asked one doubt, and doubt is कि in India naturalized citizen cannot take these constitutional offices, but in case of US can in India naturalized citizen can become president, governor or take constitutional offices, but in case of US can a naturalized citizen become president. So same thing मैं आपको explain कर रहा था कि इंडिया के केस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया के केस में एक नेचुरलाइज सिटीजन भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस को होल्ड कर सकता है, बट यूएस के केस में ऐसी रिस्ट्रिक्शन है। सेम थिंग आई डिस्कस विथ यू पीपल, ठीक है। सो दैट वाज वन थिंग दैट आई डिस्कस। सो फ्रेंड्स, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन, ये 3 तरीके हैं जिनसे आप अपनी सिटीजनशिप लूज कर सकते हैं। रिनंसिएशन मैंने आपको बताया कि एक वॉलंटरी एक्ट है। टर्मिनेशन में योर सिटीजनशिप इज गेटिंग टर्मिनेटेड फ्रॉम द डे यू एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री। डिप्राइवेशन अप्लाइज व्हेन you acquired Indian citizenship by fraud or misrepresentation of fact. Now one important idea that I want to discuss with you people, even though I have some shortage of time right now I am feeling, so overseas citizen of India के through मैं आपको बता रहा हूँ कि it was introduced through amendment in Indian Citizenship Act in 2003 and 2005
whereby PIOs and NRIs living anywhere in the world, they can register themselves as overseas citizen of India, and by registering an overseas citizen of India, they are eligible for these benefits which are being shown on your screen, that they can carry to passport. They don't require prior visa to visit India. Their investment in India will be protected through those laws which are applicable for an Indian citizen, and their children will receive special favor while seeking admissions in Indian prestigious universities. But yes, they will not enjoy right to vote, right to hold constitutional offices, and right to equality of opportunity will not be available to them. So it is not complete dual citizenship, just some benefits are being extended to you because you are sharing some special relationship with India. Now we will come on this important aspect, that is Citizenship Amendment Act 2019. Since today we have less time, our time is about to complete, so the same thing I will also discuss in the next class also, when I will start with chapter of fundamental right. So यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि who are illegal immigrants. So illegal immigrants as per Indian law, I am saying those people who entered into your country without any valid document. सो ऑर्डिनरली क्या होता है कि जब आप इंडिया आना चाहते हैं तो आप इंडियन एम्बेसी में पहले जाते हैं, उस कंट्री में अपना पर्पस ऑफ विजिट बताते हैं, आपको एक वीज़ा इशू किया जाता है. बट अगर आप बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के इंडिया में एंट्री करते हैं, देन यू विल बी डिफाइंड एज इलीगल इमिग्रेंट. हो सकता है कि आप वैलिड डॉक्यूमेंट पे आए हों, बट उस वैलिड डॉक्यूमेंट पे आने की जो आपको परमिसिबल स्टे की लिमिट थी उसे आप क्रॉस कर चुके हैं और अभी भी आप इंडिया में रह रहे हैं उस परमिटेबल लिमिट से ज़्यादा, then also you will be regarded as illegal immigrants. Then there are some categories जिसको मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है. asylum seekers जो politically आपके यहाँ शरण लेना चाहते हैं, refugees जो आगे जाके मैं आपको डिफाइन करने वाला हूँ, और उसके साथ ही साथ एक कैटेगरी यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन की है, स्टेटलेस पीपल. स्टेटलेस पीपल वो होते हैं जिनको जिस टेरिटरी में वो रहते हैं वहाँ पे उनको परसिक्यूट किया जाता है, दूसरी जगहों पे उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था. सो दे एंड अप बिकमिंग मार्जिनल पीपल, स्टेटलेस पीपल, जहाँ पे मैंने कुर्ड्स का एग्जांपल दिया है, जो मिडिल ईस्ट में इराक, ईरान के आसपास, सीरिया के आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं, कुर्दिश स्ट्रगल मूवमेंट्स चल रहे हैं. सो सच पीपल दे हैव एन इमेजिनरी आइडिया ऑफ एस्टैब्लिशिंग देयर ओन स्टेट. सो ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमिग्रेंट्स, लीगल, इलीगल, असाइलम सीकर्स, रिफ्यूजीज एंड even stateless people. Now what United Nations says, United Nation बोल रहे हैं कि रिफ्यूजी वो पर्सन है जो अपनी कंट्री से परसिक्यूट किया है, परसिक्यूट किया गया है बिकॉज ऑफ सिविल वॉर और वॉयलेंस, जिसमें एक फियर इस्टेब्लिश हो गया है कि जस्ट बिकॉज वो किसी पर्टिकुलर रेस, रिलीजन, एथनिक ग्रुप या पॉलिटिकल ग्रुप को बिलोंग करता है, इसलिए उसके साथ हरासमेंट हो रहा है और अपनी ही कंट्री को छोड़ के वो दूसरे किसी कंट्री में रिफ्यूज ले रहा है. बिकॉज ऑफ सच एस्टैब्लिश फियर, सच पर्सन्स आर रिगार्डेड एज रिफ्यूजीज. सो नाउ वी विल डिस्कस वन पर्टिकुलर कन्वेंशन, जो जिनीवा कन्वेंशन आप उसे बोलते हैं, 1951 का कन्वेंशन है, दैट केम इमीडिएटली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूरोपियन रिफ्यूजीज. Later on it got also amended in 1967, but यहाँ मैंने इसको इसलिए मेंशन किया है फ्रेंड्स कि इंडिया इज नॉट सिग्नेचरी ऑफ दैट रिफ्यूजी कन्वेंशन इन 1951 as well as in 1967 when some extra protocols were added. आपका जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ रिफ्यूजीज, कुछ स्पेशल कैटेगरीज ऑफ इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देने की बात कर रहा है, और ऐसा बोल रहा है कि दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट. सो एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट, फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, इस एक्ट का, इस अमेंडमेंट का, एक्ट का एम कुछ कम्युनिटी के लोगों को सिटीजनशिप देने के लिए है, किसी की सिटीजनशिप लेने के लिए ये एक्ट नहीं है. सेकेंड थिंग, किसको सिटीजनशिप देने के लिए है, कुछ स्पेशल कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान,
ये स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपने क्लासीफाई किया है कि ये वो स्टेट है जहाँ पे इस्लाम इज़ अ स्टेट स्पॉन्सर्ड रिलीजन, दीज स्टेट्स आर इस्लामिक स्टेट, और जहाँ के कुछ नॉन इस्लामिक ग्रुप्स, लाइक वो ग्रुप कौन है? हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, those who have well established fear of religious persecution and those who came to India either on invalid passport or invalid documents, बिना किसी valid document के वो आए, या फिर valid document पे आए but they overstayed in India, they will get citizenship through Citizenship Amendment Act 2019. So on acquiring citizenship, such persons will deem to be citizen of India from the day they entered into India, and all legal proceedings against such persons related to migration and citizenship will be closed. So here why protest is there, क्यों इंडिया में एजिटेशन हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये प्रोविजंस तो देखिए सिंपल हैं कि कुछ कम्युनिटीज़ हैं, ऐसी 6 कम्युनिटीज़ को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं, ऐसी 3 कंट्रीज़ को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन 3 कंट्रीज से इन 6 कम्युनिटी के लोग जो बिकॉज ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन इंडिया में आए एंड दे ओवरस्टेड इन इंडिया, दे डोंट वांट टू गो बैक टू इंडिया। इंडिया इन कम्युनिटीज़ के लोगों को जो इन कंट्रीज से आए हैं, जिसे इंडिया को लगता है कि दे फेस रिलीजियस टॉर्चर, रिलीजियस परसिक्यूशन, दे विल गेट व्हाट? सिटीजनशिप, एंड नो सच लीगल प्रोसीडिंग विल टेक प्लेस अगेंस्ट देम अंडर फॉरेनर ट्राइब्यूनल एक्ट और अंडर पासपोर्ट एक्ट। ये स्पेशल फेवर दिया जा रहा है। इशू यहाँ पे ये रेज किया गया कि क्या ये स्पेशल फेवर जो रिलीजियस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहा है, क्या ये फंडामेंटल राइट्स 14 का, 15 का, या हमारी जो सेकुलरिज्म की वैल्यू है उसका वॉलेशन है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आर्टिकल 14 में आगे जाके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, अभी हमने आपके साथ डिस्कस नहीं किया है कि इट टॉक्स अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ एज वेल एज equal protection of law, and under equal protection of law later on I will discuss with you people idea of intelligible differentia. Intelligible differentia एक प्रिंसिपल जुडिशरी अप्लाई करते हैं while reviewing such enactment on the ground that whether such law or legislation is violative of fundamental right of a person or not. So यहाँ पे हम ये देने की कोशिश करेंगे कि इस लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है, और इस लॉ के ऑब्जेक्टिव को स्टैब्लिश करते हुए क्या एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्रिएट किया गया है या नहीं, और ये जो डिफरेंशियल के थ्रू आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक क्लास ऑफ पीपल को दूसरे क्लास ऑफ पीपल से, क्या ये इस लॉ के मोटिव को अचीव करने में हेल्प करेगा या नहीं। सो यस, द एम ऑफ सच लॉ इज टू गिव सिटीजनशिप टू दोज हु हैव वेल एस्टैब्लिश्ड फियर ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन। और जब ये हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो एक कम्युनिटी को एक्सक्लूड कर रहे हैं, दैट इज मुस्लिम कम्युनिटी, जिस बात पे इस लॉ के अगेंस्ट में डाउट रेज किए गए। सो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो डिफरेंशिएशन है दैट वी आर एक्सक्लूडिंग वन कम्युनिटी, वाई? बिकॉज इन दीज 3 स्टेट इज इस्लामिक स्टेट, सो स्टेट इज टिल्टेड टूवर्ड्स मुस्लिम कम्युनिटी और इस्लामिक कम्युनिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट that group have been excluded. And why these 6 group have been included? Because these 6 groups are minority group in these countries who have a fear of persecution. ये आर्टिकल 14 का वॉलेशन होता, ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिया ना होता अगर हम केवल यहाँ पे हिंदूज को इंक्लूड करते। तो हमने केवल हिंदूज को इंक्लूड नहीं किया है, हमने उन सारी माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड किया है जो इन इस्लामिक स्टेट में माइनॉरिटी ग्रुप हैं। And since they have a fear of religious persecution, Indian Constitution is giving some special favor to these categories of people while granting them citizenship. और आर्टिकल 15 का ये वॉलेशन इसलिए नहीं क्योंकि आर्टिकल 15 इज ओनली अवेलेबल फॉर सिटीजन्स, नॉट अवेलेबल फॉर नॉन सिटीजन्स। सेकुलरिज्म का वॉलेशन यहाँ पे फ्रेंड्स इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सेकुलरिज्म का मतलब यही कि आप सेंसिटिव रहे माइनॉरिटीज़ के लिए, दैट इज अवर काइंड ऑफ सेकुलरिज्म। The same amendment again I will discuss in detail in the next class because this lecture was for 1 hour, so I just tried to give you people one general idea. In next class again I will start with the same Citizenship Amendment Act
and will try to resolve all your queries that you people are asking right now. So thank you for listening me friends. Please subscribe our channel on YouTube, and again I want to extend my sincere regards to you people for your continuous support that we are getting on YouTube and other various social media channels. So thank you. Again we will meet in next class with a new idea, new chapter of fundamental right. Till that time you should revise all these ideas, and again we will discuss and those concepts which are important from prelims point of view.